हेलो बच्चों, माई सेल्फ आर बी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज हिस्ट्री। आज का मेरा जो टॉपिक है विच इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डायमेंशन, और शायद आप लोग को बहुत पसंद आएगा। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, find the value of find 60 joule per minute on the system that has 100 gram 100 centimeter and 1 minute as the base unit। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमें जो वैल्यू गिवन है 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट को हमें एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी मास की वैल्यू 100 ग्राम की इक्विवेलेंट है, लेंथ है 100 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट एंड 1 मिनट की इक्विवेलेंट टाइम। दीज आर द थ्री फंडामेंटल। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये नंबर हमें गिवन है। हमने एक फॉर्मूला याद होगा, हमने बताया था n1u1 दिस इज इक्वल टू n2u2। तो दिस नंबर हमें n1 गिवन है और इसे हम कन्वर्ट हमें कैलकुलेट करना है, न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना है जिसका मास 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर और टाइम 1 मिनट हो। ये न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना मीन्स हमें जो फाइंड करना है वो n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन्स n2 दिस इज इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई। हमें n1 की वैल्यू गिवन है 60 जूल पर मिनट, इसे कन्वर्ट कर लेंगे 60 जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इसे n1 u1 को हम लिख सकते हैं m1 बाई m2 टू द पावर a, l1 बाई l2 टू द पावर b एंड t1 बाई t2 टू द पावर c। हमें इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें जो n1 गिवन है 60 जूल पर मिनट, इसे हम कन्वर्ट अगर हम करें तो 60 जूल 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड या 1 वॉट इसको हम लिख सकते हैं। अब 1 वॉट को अगर हम m के इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 जूल मीन्स kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 अपॉन सेकेंड, दिस इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। इसका मतलब अगर हम मास देखें 1 kg 1 मीटर का स्क्वायर 1 सेकेंड का माइनस 2, इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड माइनस। तो अगर हमें इसकी वैल्यू था 1, अब हम यहां पर लिखते हैं n1 1 m1 दिस इज इक्वल टू 1 kg l1 1 मीटर t1 1 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है n2 m2 100 ग्राम, l2 100 सेंटीमीटर, t2 इनटू न्यू यूनिट 1 मिनट
हमें इसकी न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना है, जिसकी मास 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर, टाइम 1 मिनट। तो हमें n2 कैलकुलेट करना है। तो n2 दिस इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 1, m1 दिस इज इक्वल टू 1 kg, m2 दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर हम यहां से देखें तो kg की पावर 1 मीन्स a इज 1। नेक्स्ट L1 1 मीटर, L2 100 सेंटीमीटर। अगर हम मास का स्क्वायर मीन्स b की पावर 2, T1 दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T2 इसकी वैल्यू 1 मिनट और इसकी पावर है -3। हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम n2 कैसे कैलकुलेट करें, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाई 100 ग्राम टू द पावर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, पावर इज 1 2 and second 1 second, 1 minute means 60 second, power of -3। ग्राम to ग्राम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, this is equal to 10 into this to this cancel, 1 into, अगर पावर है -3 तो इनवर्स हो गया 60 into 60 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10, 60 into 60 into 60 मीन्स 6 6 या 36, 36 6 या 216, 216 0 1 2 3 4 into 10 raised to power 4। This is the new unit। मीन्स 60 जूल पर मिनट को न्यू यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करें तो दिस इज इक्वल टू 216 into 10 raised to power 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लेते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है AIPMT 14 का, AIPMT 2014 का। Taking velocity, time and force as the fundamental quantity, find the dimension of mass। Taking velocity, time and force are the fundamental quantity। Find the dimension of mass। हमें मास की डायमेंशन चाहिए, जिसकी भी आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है उसे लेफ्ट में रखें। m डिपेंड्स अपॉन k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी टू द पावर a, टाइम टू द पावर b and force to the power c। This is equal to equation first। अगर हम देखें तो m की डायमेंशन 1, L 0 T 0,
is equal to Q. Velocity is Lt minus 1 to the power A, T to the power B, MLT minus 2 to the power C. This is equal to M1L0 T0. This is equal to K, M to the power C, L to the power A, L to the power C, A plus C, T to the power minus A प्लस बी माइनस अप टू सी। अगर हम इक्वेट करें पावर m टू द पावर c m टू द पावर 1 तो यहाँ c की वैल्यू 1। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पावर इक्वेट कर दिया। जब हमें a नोन है, अब l टू द पावर यहाँ 0 है, यहाँ l की पावर a प्लस c है, मीन्स a प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, बट c इज 1, a this is equal to minus 1। नेक्स्ट, अब हमें t की देखनी है, माइनस a प्लस अब b माइनस अब 2c, t की पावर 0, a इज माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट स्टेज b हमें कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू 0, मीन्स b minus 2 plus 1 is minus 1 is equal to 0, then b this is equal to 1। a b c की वैल्यू नोन है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, फ्रॉम फर्स्ट m this is equal to k v to the power a is minus 1 into b is the power of t and t to the power b is 1 and f to the power c and c this is equal to 1, like m this is equal to f into t by v। This is the dimension of mass। तो डायमेंशन ऑफ मास इज एफ टी जी माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है f is equal to a under root of x plus b into ts। Find the dimension of a by b, where find the dimension of a by b if f is force, x is the distance or displacement and t is the time। तो हमें कैलकुलेट करना है a by b। दिस अगर हम इक्वेशन लिखते हैं f, ये f1 ये f2 होमोजेनियस फंक्शन है, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, फोर्स में हम फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, मीन्स F1 प्लस।
अब हमें ये फोर्स है, तो a अंडर रूट ऑफ x f के इक्वल f इज mlt माइनस f। a अंडर रूट x मीन्स l, डिस्टेंस इज l, पावर हाफ इज इक्वल टू mlt माइनस f, मीन्स a m l हाफ t माइनस f। दिस इज द डायमेंशन ऑफ। अगर हमें a नोन हो गया, अब हमें b इंटू टी स्क्वायर f, दिस इज इक्वल b इंटू टी स्क्वायर, और f इज m l t माइनस b इंटू टी स्क्वायर, मीन्स डायमेंशन ऑफ b इज m l t माइनस ऑफ 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। तो हमें कैलकुलेट करना है a अपॉन b। a इज m l हाफ t माइनस m l t माइनस ऑफ 4, m टू m कैंसिल, l ऊपर हम शिफ्ट कर लें और t4 को भी ऊपर शिफ्ट करें, तो a बाई बी इज इक्वल टू l माइनस हाफ t स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाई b। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम डिस्कस करें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू p, दिस इज इक्वल टू b माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई a इंटू t, where p is power, x is distance and t is time। तो हम लिख सकते हैं p, दिस इज इक्वल टू b बाई ए टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। तो अगर हम यहां से रिलेशन डिराइव करते हैं तो दिस इज इक्वल टू this power, so this is also equal to power and this is also equal to power, like p, this is equal to b by a into t। a power is work done by time, this is equal to m l square t minus of 3। this is the dimension of power, work done is m l square t minus of 2 upon t, this is equal to b by a into t। तो b बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ t से मल्टीप्लाई, तो m l स्क्वायर t माइनस ऑफ 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाई b। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम लेते हैं तो हमें जो फाइंड करना है a इंटू बी की वैल्यू। अगर यहाँ से इसे हम पावर से इक्वेट करें तो p इज x स्क्वायर बाई a इंटू टी, मीन्स l स्क्वायर बाई a इंटू टी, और पावर इज m l स्क्वायर t माइनस ऑफ 3 इंटू t अपॉन l स्क्वायर इज 1 बाई a। अगर l स्क्वायर से यहाँ l स्क्वायर कैंसिल कर लें तो 1 अपॉन a 1 by a is equal to mt minus of 2, means a is 1 by mt minus of 2, means m minus 1 t square। This is the dimension of a। अब यहाँ से a by b हमें नोन है, like a b by a नोन है, और a नोन है तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे, a इंटू m l स्क्वायर t माइनस ऑफ 2, a इज m माइनस ऑफ 1 t स्क्वायर, m l स्क्वायर t माइनस ऑफ 2, t माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, m to m कैंसिल, दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन। तो a इंटू b
A is m minus 1 t square into B is L square. M minus 1 L square t square. This is the dimension of A. Next question. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, द नंबर ऑफ द पार्टिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द पार्टिकल क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम. नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग, number of particle crossing a unit area perpendicular to x axis in unit time is given by n. This is equal to minus of d n2 minus n1 upon x2 minus x, where n1 n2 are n1 n2 are the number of particle per unit volume for the value of x mean to be x1 and x2. Find the dimension of diffusion constant. मीन्स हमें d की वैल्यू, d की डायमेंशन चाहिए, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमें d कैलकुलेट करना है. तो d दिस इज इक्वल टू माइनस n x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n. डिफ्यूजन कांस्टेंट, स्मॉल n का नोटेशन क्या है? डायमेंशन ऑफ स्मॉल n इज number of particle per unit area per second. Number of particle has no dimension per unit area, means meter square per second, means हम लेंगे L minus 2 T minus x1 small n. x2 minus x1 पोजीशन में चेंज means L, और n2 minus n1. This is equal to number of particle per unit volume. This is equal to L minus of per unit volume, means ऊपर शिफ्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर दो डायमेंशन, डिफ्यूजन कांस्टेंट, माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डायमेंशन.
a small n, this is equal to L minus 2t minus of 1 into x2 minus x1 is L upon n2 minus n1 L minus of 3. तो अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट करें L क्यूब t माइनस ऑफ 1 L क्यूब t माइनस ऑफ 1 और यहाँ L माइनस 2 प्लस 1 L माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू L square t minus 1 is the dimension of diffusion constant. Next question. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वांडर वॉल इक्वेशन फॉर ए गैस इज P plus of A by V square into V minus of T. This is equal to RT. Then find the dimension of A and B. Given P denotes the P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant, and T is the temperature. अगर हम देखें तो होमोजेनियस फंक्शन है, ये प्रेशर है तो प्रेशर में हम प्रेशर को भी ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम से हम वॉल्यूम को भी माइनस कर सकते हैं, RT इज द कांस्टेंट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस ऑफ डेल्टा T इनटू V माइनस ऑफ डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू RT। मींस P को ये प्रेशर तो A by V स्क्वायर इज आल्सो प्रेशर, मींस A इज P into V square। Pressure is force by area, force की डायमेंशन ml minus 2, T minus of 2, area is L square, volume is LQ का स्क्वायर L6, तो अगर 2 से ये 4 हो गया, तो this is equal to ml 5T minus of 2, this is the dimension of A की डायमेंशन हमें दी है। अब हमें B का चाहिए, तो V B के इक्वल, अब V इज L इज द डायमेंशन ऑफ B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं जब भी हम डायमेंशन डेराइव करते हैं, तो ए बी सी आर द 3 वेरिएबल, नॉर्मली 3 वेरिएबल के लिए डायमेंशन एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 4 वेरिएबल भी, लाइक एक क्वेश्चन हम ऐसे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द रेनॉल्ड्स नंबर Na, Reynolds number Nr determine the condition
laminar flow of a viscous liquid through a pipe. Nr is a function of density of the liquid rho is the density. Its average speed v and coefficient of viscosity is eta. Given that Nr is also directly proportional to D, where D stands for diameter. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है the Reynolds number Nr determine the condition of the laminar flow. टाइप्स ऑफ फ्लो जब सेकंड बुक आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा लैमिनार फ्लो होते हैं, टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइन फ्लो. द टाइप्स ऑफ फ्लो में आते हैं द लैमिनार फ्लो. और विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, मतलब जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा. फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी. ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप. Nr is a function of density, average speed and the coefficient of viscosity. Given that Nr is directly proportional to diameter. तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं Nr के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब d की पावर हो 1. डेंसिटी पर डिपेंडेंट है इनटू वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर डिपेंडेंट. नंबर हैज नो डायमेंशन m0 l0 t0 k. diameter is l to the power 1. density is mass upon volume by m by v. वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब means m l minus of 3 to the power n. velocity is distance upon time l by t l t minus of 1. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखना है m l minus 1 t minus 1 to the power c. This is equal to m0 l0 t0 k m to the power a m to the power c a plus l to the power 1 l to the power minus of 3a l to the power b minus of c and t to the power minus b and minus of c. पावर इक्वेट कर लो. फर्स्ट a plus c and this is equal to 0. अगर हम टाइम में लेते हैं तो b plus c this is also equal to 0 माइनस कॉमन हटा दें. एंड थर्ड इज 1 minus of 3a plus b minus c this is also equal to 0. मीन्स यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा minus 3a plus b minus c this is equal to minus c. अब यहाँ से हम लेते हैं a की वैल्यू, अगर हम लेते हैं a तो ये माइनस ऑफ c और b भी लेते हैं तो ये माइनस ऑफ c. a एंड b दोनों की वैल्यू यहाँ c की टर्म में हम पुट करें
-3, A is minus of C, B minus of C, minus of C, minus of 1, means 3C minus of 2C, minus of 1, C minus of 1, C की वैल्यू -1, तो A एंड B दोनों 1। अब यहाँ वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट means NR is equal to K D rho to the power A is 1, V to the power B is 1, eta to the power C, and C this is equal to minus of 1. The Reynolds number K D rho V by eta. The Reynolds number this is equal to D into rho into V divided by eta. This is the dimension of Reynolds number. ये बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। आपको अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।